formally start. That's my own sense, and I could be wrong completely. Though I don't think nobody thinks he's wrong, and we'll discover over time in the markets and through this conversation. So I'll lay my initial remarks, and then I'll invite Prakash to put in his initial comments. So I have 4 or 5 things on my mind. See, the most important contract in the world that drives the values of all other financial assets is the dollar index. I think it's made a formidable top at 105, came down to 101, and now it's making a retracement back of this fall. Maybe another day today, perhaps by tomorrow or max by Monday, it should have made a lower top. So we'll know tomorrow or on Monday if another reversal candle comes into this rally on dollar index, that we indeed have made a second top which is lower than the first one, for me to make an even stronger claim that a worldwide rally on equities is going to become stronger from here. That is part one. Part two is a lot of Rona Dhona is going on around the world. Inflation is going to gobble up. Inflation is going to eat us up all. And, in the same breath, without even using some common sense to explain to themselves and therefore to the rest of the world, the erudite, scholarly people are in one breath talking about unbelievable inflation on one hand, and on the other hand, they're right away talking about a recession to hit us suddenly out of nowhere. Before a car that's driving at, say, 100 kilometers an hour in the direction of north starts driving at, say, 50 kilometers an hour in the direction of south, will it not first decelerate and then go to zero? The velocity will go zero, and then only it will become negative velocity. तो एकदम से आप 10-11% तक इन्फ्लेशन की बातें कर रहे हो और एक ही झटके में रिसेशन आ जाएगा. Forget about economics, forget about econometrics, forget about quant finance, forget about any scholarly things. Nothing can be more important than common sense in any thought process. तो एकदम से जोर का इन्फ्लेशन एक झटके में रिसेशन बनेगा? नहीं, इन्फ्लेशन बीच में टेपर ऑफ करेगा, वो जीरो पे आएगा. मान लो 1% पे आया और अचानक से फिर अगली रीडिंग आ जाएगी, we had a shrinkage. So the recession is defined as 2 successive quarters of shrinkage in GDP. So fine. And inflation is defined as, an index of prices month on month, and you compute the change in that index of prices and call it inflation. So inflation बढ़ता रहेगा और GDP एकदम से shrink हो जाएगी. Prices will keep rising and GDP will suddenly shrink, or prices will also have to fall first before GDP falls. Are you talking about prices will continue to rise and then we'll see an unbelievable, a dynamite kind of drop in volume, or the multiplier, the economic multiplier, इकोनॉमी की रफ्तार एकदम से स्लो डाउन हो जाएगी, वॉल्यूम बिजनेस का घट जाएगा और प्राइस बढ़ते रहेंगे और बढ़ते प्राइसेस के बावजूद जीडीपी घट जाएगी. So there is a huge contradiction in these two statements going on around the world. So what usually happens is bull markets create maniacal thinking. सारे सांड हो जाते हैं. And a bearish setup, an atmosphere full of negativity creates hysterical incantations from people. So, from a very strong inflation to sudden recession, to me appears like a hysterical overreaction to the ongoing pain of last 7 odd months. In October, we peaked out on the stock markets world over. So these two things. And then this whole pain about interest rates बढ़ रहा है. So interest rates बढ़ रहा है तो मतलब खैरात बांट दो हमें. This world went through a crisis of survival. Such a collective crisis of survival the humankind hasn't seen after World War. And there hasn't been any pandemic of this proportion in any case after the World War. All prior pandemics were before that. And in World War II, there were supposed to be some winners, at least if everybody else was to be a loser. But in such a pandemic, everybody is a loser. So this collective crisis for mankind, in which every government in the world, every central banker in the world went for pressing the defibrillator
an electric shock therapy given to a heart that has failed to resuscitate this world simultaneously together. And such a simultaneous coordinated action created such a flood of liquidity and, bloating up of asset prices that fear came, there will be stagflation. But more than stagflation now, there's real demand that has revived. And this inflation is not only a function of this insane liquidity that came in, but it has actually got exacerbated with logistics breakdowns. Part A of the logistical breakdown and the lags it created in the entire delivery chain world over was Corona. As that has got eased out, now the war and the various embargoes and the artificial barriers, the hypocrisy, don't buy Russian oil because in brackets or in silent quotes, we want to buy it. So this world has gone from one funny situation of everybody getting isolated to now world trying to isolate some against some. So this is a disruptive period, and to say that this scale of war will last forever, I think is an overstretch. The Ukraine and Russia energies, staminas, standings are disproportionate to each other. Typical warfare that really lasts for a prolonged time is one where, there is no clear winner possible. Here, it's a David and Goliath fight, and it's already surprising me how come this war has got so stretched. Is it really only a Russia-Ukraine war, or Ukraine has been chosen to be a theater to create scarcity in the world? That, just money printing did not help create scarcities, and there's still another mightier redistribution of wealth going on. There are no clear answers on either side for something in the moment, most of the time. The best answer to things is found after they have concluded. That's the nature of markets. That's the nature of life. See, even in the human life, that people think I'm doing things based on my intellect. But just go and dig up Google. The subconscious mind is where almost 7 seconds ahead of the conscious mind, decision has already been made as to what you are doing. 99.99% of the time, we are not in control of what we are doing from our conscious mind, but it is our subconscious mind that gets programmed through endless number of janmas where we wake up our sanskar and through the social conditioning from our birth to now, that which is what we construct our prarabdha. Same way technical analysis too works. I'll come to that part in a bit. And then, most of the time, most of the people are actually using their forebrain or their frontal lobe or their conscious mind to actually rationalize and justify what they've just ended up doing. 99.99% decisions are taken from the subconscious mind, which is where, all the code of our observation of the world resides. So if this entire mankind also has a personality, this will be a highly debatable way of looking at things. At least the clinical psychologists and the other kind of psychologists will all dismiss it as a overstretch of thinking. But for us to kind of create a parable or an example, for us to kind of create a mental model of looking at how the collective human mind and how the collective mind of each market and how the collective minds of various interconnected markets may be operating. So based on which way the risk has been loaded, if majority of the people have become bearish, 7,500 की निफ्टी पे 300% का implied vol था, which if made any sense would have meant that the real probability of Nifty going below zero was implied at 17%, which is an absurdity. So the human fear went to a measurable absurdity at 7,500. And the same way, when we were riding into 18,600 and the kind of ridiculous valuations a lot of B group companies had, and all of these new age companies came and gobbled that cash. So that has been all reset to a sensibility. And because of that collective human crisis, if interest rates were brought down to where they were brought down, if we are to expect कि जीवन भर हमें पैसा फोकट में दे दो, तो पैसे की वैल्यू खत्म कर दी आपने. If all of us are chasing money, then that money must be valuable, and those who are lending the money to others for use must receive a fair value. But inside a situation of crisis, the whole world decided we are going to give a khairat,
a freebie to ourselves. So who's paying for this freebie? Somebody has to pay for it. And that payment comes when interest rates are brought down to this ridiculous low. That is when we are by force of a suspension of our moral conscientiousness, borrow from future generations. These kind of deficits that governments create by printing profligate money, we are borrowing from future generations, and the future generations, unfortunately, the poor souls are not yet born. हमारे आने वाली संतानों से हम उनकी स्वीकृति के, सहमति के, उनकी बेबसी के बावजूद और उनकी स्वीकृति के बिना हम ये बोरोइंग्स करते हैं. तो ये गुनाह है. और जो लोग आज इंटरेस्ट रेट से डर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब तो ये हो गया, ये कहते हैं कि हमें जीवन भर गुनाह करने दो तभी हम खुश रहेंगे. हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, पौरुष नहीं है, हमारे अंदर वो पुरुषार्थ नहीं है कि हम कायदे से काम करके कमा सकेंगे. तो वो तो डिफीटिस्ट थिंकिंग है कि इस तरह का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, आप आने वाली पूरी नस्ल को खत्म कर दोगे. एंटायर मैनकाइंड विल बी फिनिश्ड इफ वी कंटिन्यू टू लिव एट दिस काइंड ऑफ रेट्स. दैट्स द रियल वे टू थिंक, आई फील. देयर मे बी अदर वेज टू थिंक. सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि आने वाले का भय और जाने वाले का क्षोभ सबको सताता है. Whenever there's a regime change in anything in life, there's a very disruptive state of human emotions. Human emotions एक साथ बौखला जाते हैं. So realignment and readjustment is happening. Now neither a Paytm nor an LIC nor a Zomato or anyone, when the money was, in many economies of the world, money was at negative interest rates, several of them, and a very large number of economies had close to zero interest rates. So that was a world when discounted cash flow models, which basically discount the future cash flows of any revenue generating or profit generating entity, we discount them by a certain rate of interest to arrive at the present value. So if negative interest rates or close to zero interest rates are there, then companies that are losing cash will become more valuable. And it was not at all out of world that, these mega fountains of free cash, like, the Soft Banks, were keeping on spiraling a private equity feedback loop, and a bubble was getting created in the private equity world, and that has got rationalized. So the private equity world, startups में रोज रातों रात लोग यूनिकॉर्न हो रहे हैं, पैसा लूज करने वाले को वैल्यूएशन मिल रहा है, और पैसा लूज करो, मार्केट शेयर गेन करो. So that stupidity, that actually is a stupidity. If that is the way to live and do business, so then any of these traditional large big business houses बोलेंगे यार सब अपना अपना काम धंधा बंद करो, लॉस मेकिंग नए नए स्टार्टअप्स खोलो. अब ऑलरेडी रिलायंस के पास तो 15 लाख करोड़ का एसेट बेस है, तो बोले एक बार में 5 लाख करोड़ की एक नई स्टार्टअप खोल दे जो साल का लाख करोड़ रुपया खोएगी और 50 लाख करोड़ का वैल्यूएशन हो जाएगा. तो दुनिया उस वक्त पागलपन से गुजर रही थी. और जब किसी को पागल खाने से बाहर निकालो ना, तो माहौल जब रातों रात बदलता है, वो बड़ा दुखी हो जाता है. उसको लगता है वही बड़ी अच्छी जिंदगी थी, मैं बड़ा सेटल था, उस पागल खाने में मेरी दादागिरी चलती थी, मेरी अपनी बपौती थी, मेरा एक कॉर्नर था, मेरी एक जागीर थी. पागल खाने में जीते जीते इंसान भूल जाता है कि एक्चुअली जहां पे मैं नरक में राजा था, पर था राजा नरक में ही. तो हम नरक से भी एक्चुअली बाहर आ रहे हैं, और दुनिया ये सोच रही है कि हम खत्म हो जाएंगे, वी आर गोइंग टू बी फिनिश्ड. सो इफ दीज इंटरेस्ट रेट्स आर राइजिंग, the extent of interest rate rise, the extent of inflation is a worry. We will talk about it in just a little bit. So rising interest rates is according respect to markets, according respect to the value of money, according respect to the value of human enterprise, according respect to the sacrifice anyone will make. Instead of consuming today, I will lend the money and I'll consume 5 years later. So that's fair economics. And because it's fair economics, that is why in the last 5 rate hike cycles, stock markets world over have never produced a negative return. And in fact, those are the periods when it produced one of the best returns. So how the other how to look at it is, any individual will pay increasing prices for anything so long as his earning capacity is growing. कि भाव बढ़ा के भी मैं स्टाफ रख सकता हूँ, सैलरीज बढ़ा के मैं स्टाफ और रख सकता हूँ, ये धंधा मजबूत हो रहा है. मैं बढ़ा के भी रेंटल्स पे कर सकता हूँ, मुझे बड़ा ऑफिस लेना है, मैं बढ़ा के भी रेंटल्स पे कर सकता हूँ, मुझे बड़ा फैक्ट्री खोलना है.
तो जब धंधा मजबूत होता है ना, तब जो इंटरमीडियरी इनपुट्स है बिजनेस के, businesses can afford them to be more expensive. So if interest rates are rising as a reaction to inflation, तो मतलब आप इंटरेस्ट रेट को नीचे रखो और इन्फ्लेशन बढ़ते जाने दो, कंपनियों को बस कमाते जाने दो, तो कंपनी अकेले कमाती चली जाएंगी, तो जो कंज्यूमर्स को कंज्यूम करना है उनकी कैपेसिटी इंपेयर हो जाएगी. सो नथिंग कम्स फॉर फ्री. ए गुड लाइफ and economics are both a continuously balancing game. There is never an equilibrium in life or in economics. We have to constantly respond to the disequilibrium. So only thing is कि things should not go out of hand. इतना ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं हो जाए कि हम जिम्बाब्वे हो जाए, हमारी करेंसीज की वैल्यू जीरो हो जाए, और इतना ज्यादा भी इंटरेस्ट रेट एक झटके में नहीं बढ़ जाए कि पूरा बॉन्ड मार्केट कोलैप्स हो जाए. So it's a game of gradual titrations, and that is what explains why any sensible central bank is always incremental in raising rates. आप रातों रात कुछ भी कर दोगे, चाहे आपके इंटेंशंस कितने भी अच्छे हैं, इरादे आपके कितने भी अच्छे हैं, बट जहां सैकड़ों करोड़ों लोग इन्वॉल्व होते हैं, if you make disruptive changes, then those disruptive changes will not allow varieties of economic agents to engage constructively with each other and readjust their consumption, production, and sales baskets. But a set of gradual changes allows from large businesses to small business owners to consumers to those living on borrowed credit card money also to make adjustments to their choices. And that is why rate hike cycles or rate reduction cycles are incremental in nature and not a one-time khela. Like say Dr. Manmohan Singh, the most erudite, scholarly economist ever to be a finance minister and then to run this country as the prime minister, with all his good theoretical intentions, when in 1991, in the name of the largest liberalization in the universe, financial liberalization, he overnight changed in one single line. I think he's the father of the scam of 92. Unwittingly, he became the father of the scam of 1992. So the disruptive change he made in 1991, that here on interest rates at which companies shall be borrowed will not be controlled by the CCI, the Controller of Capital Issues, but it will be market-led in companies based on their credit worthiness, their capacity to repay, and the covenants they are providing to the investors, the 3 C's of credit. So जो A group के जितने भी top notch blue chip stocks का AAA rated companies का डिवेंचर का रेट 14% फिक्स था. One night he announced this शाम को 6 बजे, and next day it's 18 or 19% at which all the companies are keen to borrow. So all the debentures and the bonds of the blue chip companies that the banks were holding, वो 25% का रातों रात फॉल आ गया, सारी बैंक्स की बैलेंस शीट impaired, huge asset write off. And in that era, the rule that all the audited companies will have to file their annual returns as of 31st March did not exist. हर कंपनी का, दुनिया भर सारी कंपनियों का हर महीने किसी न किसी कंपनी का एनुअल रिजल्ट फाइनल, कोई का जनवरी एंडिंग है, कोई का फरवरी एंडिंग है. So because of too much taxation that India lived with, lot of creativity was there. जिस कंपनी का भी एक प्रमोटर के पास 50 कंपनी जनवरी के महीने में ईयर एंडिंग आ रही है, तो भैया प्रॉफिट ट्रांसफर करो फरवरी वाली कंपनी में, उसके बाद मार्च वाली में ट्रांसफर करो. सेम गेम बैंक्स आल्सो स्टार्टेड प्लेइंग. ये अलग अलग बैंक्स का अलग अलग महीने में ईयर एंडिंग है, तो बीआर नोट इशू करो, अपने लॉस मेकिंग सिक्योरिटीज को लेंड कर दो एट अनरिलेटेड वैल्यू टू द मार्केट्स विद अ बायबैक क्लॉज. सो दे वर बेसिकली, व्हाई डिड द बैंक्स हैव अ मोटिवेशन टू पार्टिसिपेट इन दिस बीआर गेम? और एक कच्चे में काम क्यों होने लग गया कि ब्रोकर को बीआर का नोट लिख के दे रहे हैं, और छोटे मोटे ब्रोकर्स की भी इतनी हैसियत बनती चली गई कि दे बिकेम लार्जर देन बैंक्स, और हजार हजार करोड़, 600 करोड़, 500 करोड़ बैंकों में ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर करना शुरू किया. But they were playing a game in which the broker became central to shifting their losses. So I'm getting into too much detail. Let me come and wrap up. These were initial remarks. So given the history that in last 5 rate cycles, unbelievable stock market returns have happened, given the fact that there is inflation, and before recession would come, I'm dead sure inflation will decline, and that window of a declining inflation is what can roast beers completely. Right now there's a total groupthink going on, and then
again, this conviction comes from, finally, there is endless amount of descriptive logic, whether on fundamentals or on economics or even in econometrics and quant finance. You have to choose the amount of data you will use and the models you will use. So judgments are involved in that also. So the least judgmental method of markets that I've found, where I can objectively realize कि boss तुम wrong हो रहे हो, सलट जाओ और निकल लो यहाँ से, is technical analysis. And a lot of people are over obsessed with that. ये fundamental नहीं देखता है, ये लोग लकीर के फकीर हैं. ठीक है, बहुत सारे लकीर के फकीर सड़क छाप लोगों ने भी technical analysis चालू कर दी. इसका मतलब technical analysis is not useless. I think after holding 8 postgraduate qualifications in finance and coming within the top 5 percentile of the class in all of them, not at all any intellectual arrogance. If I choose technical analysis as my overriding decision-making system, it is because all finance, economics, and econometrics is eventually about study of human behavior. Money is a very, very human idea. Monkeys, snakes, and donkeys don't trade, they don't invest, they don't save, they don't have an idea of money. So all of these maths that you see in quant finance or economics or even in fundamentals is also visible in technicals. Uske apne formula hai, but none of the maths on any of them can completely rule out any risk. पक्का जवाब किसी के पास नहीं है. All approaches to markets are like different religions, and no one religion can define and say मेरा God ही God है. So leaning finally on technical analysis, about which I'll talk in part 2 after Prakash has laid his initial thoughts. I see a large number of charts are still around here, where over the next couple of years 2-bagger, 3-bagger charts are appearing. 5-bagger भी है कुछ छोटे वाले stocks में. Even for the next 3-4 months, there are enough number of charts amongst the larger, more liquid names, जहाँ 30% से 50%, 70% की भी मेरे को returns दिख रही है. So index that I am able to analyze appears like will never create a conviction. ये बहुत घटपड़ उछल कूद के साथ चलेगा index. सारे world के indices इसी तरह constructed है. But even if a new high may end up coming, we may never get a conviction that the worries of this world are gone. And by the time we might get to a new high from here, which may not be more than say 15% or 17% return on the Nifty, 16,600 से 18,600 यानी 1/8, 12.5% की राइज में तो न्यू हाई आ जाएगा. बट 12.5% की उस राइज में 30, 40% अगर लार्ज कैप्स में बहुत से स्टॉक्स हैं जो रिटर्न दे सकते हैं, तो आई थिंक एज माई closing point for my opening remarks, there is endless variety of intellect and there is endless variety of modeling through which we can think markets. But eventually, to be successful in life, in relationships, and in stock markets, for stock market has a full life of its own and a giant relationship of crores of people with each other. In any relationships and in any human interactions and engagements, those who will be willing to suspend their personal private intellect and accommodate by some good professional methods and create an allowance to be able to go with what we call as the flow or the might and force of the masses are the ones. जैसे अपनी बीवी से बहस नहीं करनी चाहिए. हाँ डार्लिंग बोलो, आज तू भूल गया, मैं नहीं ला पाया, कल लेके आता हूँ. बहस करोगे मारे जाओगे. वही है स्टॉक मार्केट भी. सो आप सारी पढ़ाई लिखाई कर लो, आप सारी बैलेंस शीट छीन लो, आप अपने सारे इकोनॉमिक्स के अनुमान लगा लो. The nature of fundamentals by design is that they are reported data. There will be a lag in them. The nature of all policy guessworks that you do, पॉलिसी भी कोई ना कोई इंसान बना रहा है. पॉलिटिशियंस की अपनी कंपल्शंस होती है और आप किसी दूसरे इंसान की साइकोलॉजी को और उसके कंपल्शन को कंप्लीटली जज कर लोगे. ये भी एक बहुत रॉन्ग, too much of intellectual arrogance that I'll be able to judge policy better. So the easiest thing to judge then is the flow of prices and the flow of liquidity. तो आप इकोनोमेट्रिक्स भी देखो, इकोनॉमिक्स भी देखो, पॉलिसी पे भी अंदाज लगाओ, बैलेंस शीट को भी पढ़ो, पर लास्ट में करनी मेरे को वही पड़ेगी जो टेक्निकल एनालिसिस बोलता है. So that's what I am from and I see from charts. I cannot say to you with confidence कि निफ्टी वापस 16,100 तक गिरेगा कि नहीं, 16,600 वाला, बट 16,100 गिरे बिना 18,600 हो जाएगा, उसका रीजनेबल कॉन्फिडेंस लगता है. बट निफ्टी से ज्यादा बहुत स्मूथ पैटर्न्स में इतने स्टॉक्स में देख रहा हूं कि इस बाजार में मंदी मार करके पैसा बन ही नहीं सकता है. सिलेक्टिव स्टॉक्स में पैसा तेजी करके बनेगा एंड दोज विल डिस्कस इन पार्ट 2. लेट मी वेलकम प्रकाश दैट ही एक्सप्लेन्स in a fair detail his current thesis on markets, and then we'll open the floor for some comments, questions on this first round, and then we can always go back to discussing sectors and stocks.
and it's already 8 o'clock. We'll try to wrap up by 9 o'clock. Prakash, please unmute yourselves and share your thoughts. Thank you, Kediaji. So you have covered this inflation and dollar index and global markets and everything in detail. So I'll go back 3 weeks back when things were really bad, right? And in one of our spaces, we, you, me, and Safir, three of us were really positive. Mainly you and me were like very confident that this market will turn around. And touch wood, with the God grace, now Nifty is up some 1,000 points from that level. So at 15,700, I told everyone very clearly my sentiment indicators are extremely bullish, and I gave a lot of data points that why the HNI book is shifting, the number of last shares funding book is going down, and everything. So you can go and hear that recording in our YouTube channel or on any other platform. So that view has exactly played out. And after this massive rally 3 days ago, I said that the market will rest here, and it will rest for few hours or few days. And we wrote straddle of 16,650, and that straddle we wrote at 280. We gave that call on Twitter live, and that straddle expired at 22 rupees. So in 3 days, Nifty moved nowhere practically, moved zero change in the Nifty. But if you followed our strategy, you made some 250 odd points on the Nifty without any headache. So now, as we speak, right, the small cap index has rallied some 10% from the recent lows, mid cap some 10% from the recent lows, and Nifty is up some 1,000 points from the recent lows. But now, what is next? So the next part is very difficult, because we have certain event lined up, right? So on 8th we have RBI policy, then on 10th we have inflation data from US, then we have advanced tax number last date of 15th June, and then we have your Fed meet on 14th and 15th, right, June, and we will react on that news on 16th June. So lot of events, and give and take everything. This crude is not coming down, though I have a bearish view on that, but that is not coming down. Dollar index is showing some kind of a fatigue, which KDIZ has clearly mentioned. So what is next? The market can do two things, right? Market can straight away go to 17,400 and then again correct back to 16,700. This is the probability number one. The probability number two is, as KDIG said, like, can we go to 16,200, 150? Chances are, again, 25 to 30% probability attached to that. 16,100 to again go back to 16,800. This is probability number two. And the probability number three, which is little unlikely, is straight away we go from this place to 18,300, 400, which is little difficult because the June quarter numbers will be little bad. And this is my wish, right? And normally when I wish with a lot of data and the context, right? So it's not my wishful thinking. I want to go to June quarter numbers. I want to approach quarter one numbers or June quarter numbers with fairly low expectation. So when TCS result is hitting street, I want the TCS price around 14th June or 15th June should be around 3,200, not 3,500. Then, because what will happen if you are getting a average number or even a slightly bad number at a very depressed prices, chances are stocks will not fall more. So I want to see some kind of a consolidation. This is my wish. Market can prove me wrong, for sure. If things turn like crude goes to below 100 or dollar index goes below 100, then things will be totally different. But let's say crude remain in this band of, let's say, 110 or 105, and dollar index remains at, let's say, 101.
I want to approach June quarter numbers at the level of 16,500, 600. I'll be more than comfortable. I don't want market to rise before June quarter numbers. Once those numbers are start hitting you, and then you suddenly realize that the Infosys margin is not going down. Infosys deal win is not slowing down despite of US is slowing down. So if these things suddenly come to investors mind that these companies are not reporting bad numbers, then you can have a serious bull case, which KDI is mentioning that all-time high, right? That is quite possible. But before that, I want to see depressed prices. Depressed prices means there is no movement, no expectation building on the either side, right? No bull or bear, right? And the worst part with the bear is if he's not getting follow through on the downside, he will feel nervous. He will feel surely nervous when he's approaching the result season. So first number will be reported by TCS, then Infosys, and all the big ones. And I'm telling you with all the certainty, IT companies will not report bad numbers. Banks will not report bad numbers. So these two important pillars of the markets, they are going to report a very decent number. So I don't know. The downside for sure is protected. Upside, I want to see couple of macro triggers going in my favor, which is dollar index and then the crude, and then we will take it from there, right? And whatever I do, generally I try to help retail audience out there. So I'll put my view in some cryptic manner, or maybe I'll tell you straightforward that this is going to happen. And with all the data and certainty, and at 16,700, I told you this market will not move anywhere for next 3-4 days, because please understand, this is a very simple logic. On a bullish day, data will look bullish. All the FNO data will look bullish, right? If you are a blind analyst, right? And on any very bad day, look, let's say you've fallen 300 points. On that day, you'll see a lot of call writings, you'll see a lot of put unwinding. What is the great thing about the data, right? So you have to see the context, and then you have to see the data. So at 16,700, we observe that there is a lot of bullishness in the FIIs and all those metrics, right? But market moved nowhere, right? Because that thing is already priced in, and I told you clearly in that on that day as well. I did that space for just 15 minutes only for traders, and exactly the same view has played out. So my limited point is I am ready to buy any panic, real carnage. But I am not willing to chase the breakout, because I know for the fact that the couple of, apart from banking and IT, some of the, industries may suffer due to higher crude prices and global, supply chain disruption. So I want to, this is the idealistic situation I'm trying to visualize, that I want market to approach the next earnings season with almost no expectation. And that will be a great news for bulls, because after that, you can have a huge rally, because once the Fed is out, once the Fed TCS result will come on 10th July, not 15th June, so 10th to 12th July. So we are like almost 40 days away, and practically 28 trading session away. So after 28 trading sessions, you'll have a TCS result, and after 30 trading sessions, you'll have Infosys results. So I want to, get those numbers around 16,500 levels. So there is no good news priced in the market. And whenever, if you are TCS or Infosys is reporting a great deal win and all those, and their retention of the big clients and all, chances are market will explode. So this is my base case. I'm trying to play this view for next 30 to 35 days, and that's how I'm positioning. I'm more approaching this market with a now slightly bullish bias and trying to buy the panic. So that's it from my side, KDSG, for now. Thank you so much, Prakashji, for the thoughts you shared. Before we go into round two, talking about specific sectors, maybe specific assets in the world, like various commodities, currencies, or in our market, various sectors and some key stocks. If from the discussion so far, there are any comments or questions, you can
raise hands or invite us. You can we can always invite you to be a speaker. So if anybody would like to speak, plus just send me, or if you just click on the request mic button, we'll be able to see you and add you as a speaker. Yogesh Chandeji, would you like to share your thoughts on what you see the markets at this point? And anybody else, then send us a mic request. So Prakash, since we don't have yet anybody in to No, speak something or raise questions, should we do a brief discussion amongst you and me on where do we see the various assets and the various sectors going briefly, and maybe we can even wrap up this space a little sooner today if there isn't enough engagement and people are broadly just no. fine with what I we are think, saying. Kedia, I think. What do you suggest, Prakash? No, just 2 minutes, huh? Let me open my DM, right? Because of that, I think we are not getting the request. 2 minutes, huh? There is a problem with default setting. Let me. I think I'm getting a lot of requests. Just a sec, huh? Kedia ji, just hold on. In the meantime, what you can do, you can share your brief thought on Bank Nifty and Metal Index, because there is a lot of long position pending from the retail side on these two indices. And what is your view, if you have any? I'm sorry, Prakash, I could not hear what you said because my speaker phone has suddenly stopped working. So I was also looking into the DM. Can you please repeat what you were just saying? So I'm, because a lot of retail is stuck with this PSU banking basket, mainly the Bank Nifty. You can share your view and on the view on the metal index, because Tata Steel What do you has mean by fallen. the middle index? Mainly, I want to have a view from you on the steel stocks, and maybe top 3 4 stocks if you have any view. Mainly on Tata Steel, No, and then this is a question from you or somebody else? no, because I am getting a lot of requests from the audience, right? So let's first talk about this PSU banks. Yeah. I think the way अब ये रातों रात gratification जो सबको चाहिए कि आज लिया कल मुनाफा चाहिए वो वाला charts नहीं है. But if somebody can take a 6 months to a 1 year view, I'll not have the liberty to disclose names. But this afternoon, just around market closing, when I wrote to the big hat that can IOB be a 5-bagger over the next 1 year to 18 months? And if so, what is the story developing? So the reaction was not of any dismay or horror, but rather, there are 16 requests to speak, but they are not visible. How come? I can see there are 16 requests to speak, but the requests are not getting visible. And Kedia ji, can you make Navneet as a co-host, and I'll be the speaker, right? He knows these things better than me, right? So he will be able to help us. Navneet. What is Navneet's handle? Navneet Bata, you can request नहीं यार, Kedia ji. ये जो है ना, ये कुछ गड़बड़ है स्पेस में. हाँ, वो मैंने कुछ गलती मेरे कर को भी दिया नहीं इसको दिख रहा है. एज I am ए. also trying. So we have a query from Dheeraj Garg. Dheeraj, you Hello. can. हाँ. Hello. Kedia ji, I can hear you. Please go ahead. Can you send me on WhatsApp or on the DM handle of Navneet so that I can add as him co-host? But I don't think it's about knowing how to handle it. कुछ space के software में आज गड़बड़ है. When I go out of the space, it is showing 16 speakers are requesting, but right inside the dashboard, I can't see any request. I also can't see any request. हाँ, But तो I am नवनीत का getting. आप हैंडल भेजो, मैं उसको भी ऐड करता हूँ, क्या पता उसको दिख जाए. नवनीत ने अभी आपको रिक्वेस्ट किया होगा. रिक्वेस्ट जब दिख ही नहीं रही है मुझे, तो कैसे मेरे को दिखाई पड़ेगा? आप मुझे व्हाट्सएप में इसमें भेजो प्लीज. देयर इज नोबडीज रिक्वेस्ट गेटिंग विजिबल. मेरे को क्यों? तो रिक्वेस्ट आपको भी दिखेगी. हाँ, वही कुछ आज प्रॉब्लम है. Just hold on, everyone. We'll try and get a grip of this slightly damaged space. We'll add one more person as a co-host, and maybe he can then see others. Navneet has requested. I can see him now. So please. So I've added him as a co-host. And if you guys, Navneet, have you received the co-host invite?
So while Navneet joins as a co-host and starts adding other people as a speaker, I'll continue to answer about these PSU banks. So when I asked this leading light in the markets, can IOB be a five bagger, instead of screaming back at me, "ये तू कुछ भी चार्ट देख के क्यों बोल रहा है?" He started discussing it seriously. So that's not impossible. That is the sort of chart. Even on an IOB, I am looking at a potential for a five bagger. I will not right away start dumping in large amounts of money on these stocks. छोटा exposure लेना शुरू करेंगे, because we need to see a fundamental story or a thesis developed to actually believe such kind of massive charts. Or even a UCO bank can become a three bagger, or a Karur Vysya becomes a three bagger. So ये बैंकिंग स्टॉक्स में से जो स्टॉक्स पिछले 2 साल की तेजी में कुछ ढंग का पार्टिसिपेशन ही नहीं किया, 6 रुपए वाला 30 रुपया होने के बाद अगर आज 18 रुपये पे है, तो फाइव बैगर होकर के इट हैज गिवन ए ऑलमोस्ट 40% 50% करेक्शन. अब ये स्टॉक्स हो सकता है नेक्स्ट राउंड में थ्री बैगर बनेंगे और आपको एसबीआई अब थ्री बैगर नहीं बनेगा. सो बैंकिंग में दीज स्मॉलर स्टॉक्स दैट हैव हैड ए 10-year काइंड ऑफ डिक्लाइन, एकदम बर्बाद कर दिया गया जिनको. तो आई डू नॉट नो व्हाट इज इट डेवलपिंग, व्हाट इज इट गोइंग टू कम ऑन द regulatory side that can suddenly revive even the completely smashed banks. So a good way to play this will be to not get loaded up on just one or two of these banks. Kind of take it as a adventure investing allocation of your portfolio ki 1%, 2%, 3% of my portfolio. I'll take on this bet that there will be some massive change in the banking sector जहाँ एकदम तबाह हुए हुए banks के भी stocks 3 बैगर 4 बैगर यहाँ से वापस हो सकते हैं. And that allocation you distribute over 5-6 of these banks. That's the approach we have taken. That's the approach we have advised our clients. And then as the story develops, we may make them even more mainline active allocations. So that's on banks. As far as steel stocks are concerned, the way charts are currently poised, Prakash, for whatever reasons that will be known later only, I think, the early buy signals, the earliest buy signals have come in each and every Jindal Steel name, each and every of them, out of which I think the JSL SR stock has the largest upside of a serious 60-70% upside. That's the kind of chart I'm noticing. The catch about charts is you cannot take a definitive stand. You'll have to keep some trailing stop loss, and that's the only utility of charts. बैलेंस शीट और फंडामेंटल्स में क्या होता है ना, कोई स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं हो सकता है. तो चार्ट्स आर नो सुपीरियर देन बैलेंस शीट्स, और बैलेंस शीट्स रीडिंग इज नो सुपीरियर देन चार्ट्स. बट गिवन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ प्राइस लेवल्स एट विच वन कैन थ्रू पैटर्न्स डिसाइफर कि भैया इस लेवल के नीचे टूट गया, तो आई अबैंडन माय थीसिस. बिकॉज ऑफ दैट आई हैव बिकम अ स्लेव ऑफ चार्ट्स कि मुझे बर्बाद होने से बचा लेती है. But a lot of innocent people might be in this space and might think technical analysis is some voodoo or black magic or tantra or some kind of special skill कि जहाँ जो बोल दिया वो हो ही जाएगा. जो बोल दिया वो हो ही जाएगा, और सिर्फ पावर विष्णु जी के हाथ में. ब्रह्मा जी को भी मेहनत करके इस संसार में सब चीजों का निर्माण करना पड़ता है. जो विष्णु की कल्पना है उसको ब्रह्मा को साकार करना पड़ता है, ब्रह्मा जी को भी काम करना पड़ता है. और राजा राम ने भी जब अवतार लिया, अवतार राजा राम के रूप में और कृष्ण के रूप में भी विष्णु ने जब अवतार लिया, तो उनको भी अपनी ड्यूटीज को निभाना पड़ा. सो एनी इन्वेस्टर और ट्रेडर हैज अ ड्यूटी टू रिस्पेक्ट हिज कैपिटल एंड ही मस्ट कीप सम काइंड ऑफ ए स्टॉप लॉस. कोई जादू की छड़ी नहीं है. कृष्ण ने और राम ने भी दिव्य अलौकिक शक्तियों के बावजूद अपने दायित्व का वहन किया. हर एक इन्वेस्टर को करना चाहिए. सो आप उसमें स्वेड मत हो जाइएगा हमारी स्ट्रांग बात करने की भाषा से. हम ट्रेडर्स हैं, हम हर चीज को बड़ा स्ट्रांगली सोचते हैं और बहुत नरम होकर के फटके से निकल जाते हैं जब हमारे खिलाफ पड़ता है वो, और आप उसको पकड़ के बैठे रह जाओगे. तो हर एक चीज का ट्रेलिंग स्टॉप रखिए. सो दैट्स ऑन स्टील, एंड आई थिंक टाटा स्टील विल बी द नेक्स्ट टू कंफर्म a very massive buy signal with a 40% kind of an up move possible. These are very high operating leverage stocks. The steel sector is a high operating leverage stock. So despite great promoter value and high quality and high credit worthiness and a high quality balance sheet, the operating leverage is very high in the commodity business. And sale जो है, अगर कोई वो 5 रुपया 10 रुपये का दिमाग फोड़ी करेगा, उसको सट्टा ही करना है, तो फिर वो जिंदल के नाम में कर लो. बट अगर आप इन्वेस्ट करने की सोचो तो इट्स द पैटर्न ऑन सेल इज अ लिटिल मोर नॉइजियर. बट अगर आप 5-10 रुपये का टॉलरेंस रखते हो, तो काइंड ऑफ कैश दिस बैलेंस शीट होल्ड्स, द काइंड ऑफ steel capacity at the value of the steel capacity is the price at which it is going. Matlab, it's a very undervalued stock according to me amongst the entire steel pack.
But of course, whatever quality concerns on relative quality concern compared to the other steel stocks on balance sheet, इसीलिए इस भाव में मिलता है. तो सेल का एक इन्वेस्टमेंट व्यू बना के आप यहाँ से थोड़ा SIP करें. और जिंदल के स्टॉक्स तो मेरे को लगता है सारे घूम चुके हैं, उनमें इंतजार करने वाला करता ही रह जाएगा, बढ़ते चले जाएंगे. I hope I have given a blunt and straight answer, Prakash ji, on your query on steel stocks. No, great. So Navneet, I think your message is also like you. Nobody can DM you. I think no, sir. People are saying questions to me. Okay, so you can add them as a speaker, or either you can ask their questions and we will take it up. Okay, sir. नीलेश शेट्टी का सवाल है. FMCG stocks have shown resilience amid the inflation scare. So, do you think that the inflation point is well absorbed now, and FMCG will not have a much deeper fall from here? Kedia ji, wanna take this? Please repeat the question. I could not hear it very clearly. Sure, sir. FMCG stocks have shown resilience amid the inflation scare. So, do you think that the inflation point is well absorbed now, and FMCG will not have a much deeper fall from here? See, the answer given in this question itself is right, but the question itself is wrong. The observation is these stocks have shown resilience, which is correct. So then the question asks, does that mean the inflation impact is absorbed? Is completely wrong. Why? Because to utilize FMCG stocks as a computation of whether market has discounted inflation scare sufficiently is completely wrong. Because the biggest beneficiary of inflation is always the sector that has got a very strong brand or a customer franchise and whose products are relatively inelastic to prices. जिलेट का ब्लेड अगर और 10% महंगा हो जाएगा तो दाढ़ी बनाने के लिए लोग रामू नाई के पास जाना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है. जो अपनी जवानी से आज तक जिलेट का ब्लेड यूज करा वो वही ब्लेड यूज करेगा, और जिलेट के भी 50 ब्रांड्स, उसमें से जो ब्रांड को यूज करता है. अगर थोड़ा सा बिस्किट महंगा हो जाएगा 15%, तो जो सवेरे चाय के साथ मोनाको का बिस्किट खाता है वो मोनाको का ही बिस्किट खाएगा, वो जाकर ब्रिटानिया थिन आरारूट खाना चालू नहीं करेगा. और जो ब्रिटानिया थिन आरारूट खाता है वो दूसरे ITC के सनफीस्ट का बिस्किट खाना नहीं शुरू करेगा. सबके अपने अपने फेवरेट बिस्किट्स हैं. और अगर रिलेटिव प्राइस वॉर अगर कोई भी FMCG कंपनीज करेंगी तो प्राइस वॉर इज अ डिफीटेड स्ट्रेटेजी. वो थोड़े दिनों के अंदर सारी FMCG कंपनीज सुधर जाती हैं. सो दे नेवर इंडल्ज इन प्राइस वॉर्स. सो इफ इन्फ्लेशन परसिस्ट्स then the largest economic beneficiaries will be these companies. What I'm on the other hand noticing is कि बाकी के मार्केट के स्टॉक्स बहुत बुरी तरह से उठने को तैयार हो गए हैं, बट जो इन्फ्लेशन से स्टॉक्स का प्राइस क्रेजी हो सकता था ऊपर की तरफ, विच इज FMCG सेक्टर, वो गिरा नहीं ज्यादा, और वो अभी तक चार्ट पूरी तरह से अक्रॉस द बोर्ड उठने के लिए भी रेडी नहीं है. सो इन दैट सेंस परहैप्स देन इट मे बी राइट दैट द ब्रॉडर मार्केट, अक्रॉस द ब्रॉडर मार्केट, इन्फ्लेशन का स्केयर प्रॉपरली डिस्काउंट हो गया है और अब इन्फ्लेशन आगे चल के टेपर ऑफ हो सकता है. शायद उस भय में FMCG स्टॉक्स उठने में टाइम लगा रहे हैं. एंड हु नोस टुमारो इफ द इन्फ्लेशन स्केयर becomes reduced also, even then the kind of overpricing Hindustan Lever had in 2020 कि 2020 की पूरी तेजी में बाकी इंडेक्स बढ़ता रहा और हिंदुस्तान लीवर तो 2400-2500 से घट के 1700-1600 तक चला गया. 2020 की तेजी में हिंदुस्तान लीवर नीचे आ रहा था, बाकी निफ्टी ऊपर जा रही थी. सो जो 50 का पी रेशियो तब था, आज ये सब पी रेशियोज ओवर नेक्स्ट 2 इयर्स जो भी अर्निंग्स ग्रोथ आई और प्राइसेस इनके सबके ऊपर से नीचे ही हैं, तो ये सारे FMCG स्टॉक्स आज मच मोर रियलिस्टिक अर्निंग्स पर अवेलेबल है. तो जब ये मार्केट कमोडिटीज, साइक्लिकल्स और इन आइडियाज को चेस कर चुका होगा, आई थिंक आफ्टर दैट द FMCGs विल आल्सो परफॉर्म इवन इफ inflation is no longer such a big scare because there is a market related beta. I am hopeful उनके इतने complex statement पे I am hopeful my answer is not more complex. So I am not bearish at all on FMCG stocks. इसमें दो तरफा hedge है. अगर इन्फ्लेशन फट गया ऊपर और ये कंटिन्यू करता रह गया
तो डिफेंसिव बाइंग में कि पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करो, घटते बाजार में भी हिंदुस्तान लीवर चढ़ जाएगा, एशियन पेंट्स चढ़ जाएगा, डिफेंसिव बाइंग आ जाएगी. When these stocks in a bad market or a declining market are keeping on going up, that's a sign there is a defensiveness. Portfolios are getting loaded into defensiveness. तो जो यूजुअल साइक्लिकल्स और उनको डंप मारेंगे, पर ये साइक्लिकल्स और ये जो सो कॉल्ड ग्रोथ स्टॉक्स की जो आईटी की जो पिटाई हो चुकी है, मतलब बच्चे की जान लोगे क्या लेवल पर उतार दिया है. नाउ दैट दे आर गेटिंग रिवाइव्ड, तो देयर इज ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल एनीबडी इन द वर्ल्ड हैज. चाहे कोई $1 बिलियन का पोर्टफोलियो रन कर रहा है, 10 बिलियन का कर रहा है, चाहे कितना ही बड़ा ऑपरेटर है, चाहे हम अपनी छोटी सी पान की दुकान चला रहे हैं मार्केट में, ऑल ऑफ अस हैव टू मेक अ चॉइस कि पहले क्या लें और बाद में क्या आएगा. तो आई थिंक मार्केट की प्रायोरिटी पे से एक बार एफएमसीजी इमीडिएटली मुझे नजर नहीं आ रहा है, बट इट्स अ सेफ कुशन इन योर पोर्टफोलियो, एज गुड एज क्लोज टू होल्डिंग कैश कंपेयर टू ऑल अदर स्टॉक्स. अगर इन्फ्लेशन स्केयर सप्रेस नहीं हुआ तो ये फट जाएंगे, और अगर होने भी लगा तो ये थोड़े से लेट और लैगार्ड मूवर्स होंगे. So it's going to create a cushion. I think you should have a respectable allocation within FMCGs. ऐसे भी 2-2.5 साल की साइकिल में अब ये relatively undervalued हो गए compared to their own self. The relative strength of valuation on these has become attractive. vis-a-vis broad market. अब आप स्टील के स्टॉक की पी रेशियो के साथ लीवर का तो पी रेशियो कंपेयर करोगे नहीं. पांडे जी, any inputs you have on this apart from what I've said? No, I think they have gone through, a lot of time correction. So Yes. they have gone through some kind of underperformance for last 2.5 years. So maybe उनका 2-3 साल का टाइम, एक्चुअली एफएमसीजी में बड़ा करेक्शन होता नहीं है प्राइस वाइज, तो वो नॉर्मली एक टाइम करेक्शन में जाते हैं. तो 3 साल का टाइम करेक्शन ऑलमोस्ट होने वाला है. यू मे सी सम काइंड ऑफ अपसाइड इन एफएमसीजी स्टॉक्स, बट क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं और मार्केट ऑलरेडी बहुत सस्ता हो चुका है, तो पहले थोड़ा सा पैसा हो सकता है कि जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं उनमें आए, और इनमें जब भी जैसे केडिया जी ने बोला कि मार्केट खराब होगी ना, so people will run for cover or for some kind of a safety, and then you will see some kind of a buying in FMCG. But in FMCG you will be making 12-14% kind of a CAGR return over the longer period of time. So that's it, that's about it. Ujjwal, if you have any query you can ask. So Kedia ji recently tweeted that the cotton prices might crash, and today we have seen like a broad-based rally in textile stocks, Raymond all-time high, Bombay time. Hello. Hello. Am I audible? Yeah. Yes. So you recently tweeted about cotton prices crashing, and we may get the inflation which has been like 150% in cotton prices. They may correct, and recently the textile basket has been rallying. Raymond all-time high, 2018 highs were taken. Bombay dying, everything they are rallying. So what's your view on the textile sector for a long term? See, I did not tweet that cotton price will crash. That's a very strong statement. यही problem है. हम वही सुन लेते हैं जो हम सुनना चाहते हैं. Correct 20-25%. That is right. So now don't correct me. When I'm answering, allow me to answer. When you will speak, I listen, and when I speak, you listen. So my tweet was about that there is a likelihood of a long-term cyclical top beginning to build. A top getting confirmed is another tone I will speak in, and a process of topping out beginning is a different flavor. Now, after a good decline from 155 on the US cotton number 2 futures, 155 के हाई से 135 का लो आज मारा और अभी 139 है. So the short-term decline on cotton is done. A rally like dollar index has begun today. अब ये रैली वापस नया हाई नहीं मारती 155 के ऊपर, 145-46 पे किधर सलट जाती है, and a second lower top is formed. That's when I'll come back on Twitter and everywhere else on TV or wherever to speak about that the probability of a long-term top having been formed is much, much higher. That's how the language has to be taken. Point number 1. Point number 2, for any stock which is either a manufacturer of something or it's a big consumer of something, किसी भी स्टॉक का, चाहे वो हिंडाल्को का स्टॉक कमोडिटी का ले लो आप, चाहे आईटी स्टॉक्स के लिए अगर आप ग्लोबल जीडीपी का पैरामीटर जो है यूएस इंटरेस्ट रेट, यूएस यील्ड्स को ले लो, कि जब तक यील्ड्स लोअर है ग्रोथ बढ़ेगा तो
जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगते हैं आईटी के स्टॉक्स को पीट दिया। एनीथिंग जिसका इनपुट आउटपुट वेरिएबल, उसके साथ अगर आप कोरिलेशन रन करोगे किसी सेक्टर के या स्टॉक्स के रिटर्न्स का, तो वो कोरिलेशन जितना स्ट्रांग होगा उससे ज्यादा स्ट्रांग कोरिलेशन स्टॉक का अपने कंट्री की स्टॉक मार्केट की इंडेक्स के साथ होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर कोई सिर्फ एल्यूमिनियम के प्राइसेस को देख के हिंडाल्को को खेलता रहेगा तो किसी टाइम उसकी बिना उस तरह के हजामत हो जाएगी, क्योंकि हिंडाल्को द अमाउंट ऑफ द explanation of variation in returns for a stock like Hindalco or any textile stocks based on their input cost, that is done by the input cost, the amount of variance explanation in returns that is done by the input cost, a larger explanation in the variance of that stock price is explained by movements of Nifty itself. That is, the stock market beta is at least twice as much important as the input costs. सो इनपुट कॉस्ट के ऊपर एक इन्वेस्टमेंट थीसिस या डिसइन्वेस्टमेंट थीसिस बहुत शॉर्ट टर्म में नहीं बनानी चाहिए, बट अगर एक सस्टेन लॉन्ग टर्म लंबा 6 महीने साल भर का अगर ट्रेंड चल जाएगा, तो चाहे वो स्टील के स्टॉक्स हैं, चाहे बाकी बेस मेटल्स के स्टॉक है या कॉटन के स्टॉक्स है, देन दैट थीसिस इज राइट. सो हैविंग पुट आउट दिस मोर एज ए कैविएट दैट देयर आर अ लॉट ऑफ इनोसेंट लिसनर्स इन स्पेसेस ऑफन, और वो कोई चीज को पार्शियल सुन के गलत अनुमान नहीं लगा लें, यहाँ से आंख बंद करके हम टेक्सटाइल के स्टॉक ले लेंगे, आंख बंद करके उनको लेने का टाइम बाद में आएगा. सो एक राउंड कॉटन के प्राइसेस का घटा है, आज से वापस रिवर्सल स्टार्ट हुई है. अब इसका मतलब ये नहीं कि कल का कल जाके आप कॉटन के स्टॉक्स बेच दीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने ओवरसोल्ड हो चुके हैं, और बाकी मार्केट अगर चलेगा ये 8-10 दिन के आगे पीछे के गैप से भी चल सकते हैं. कॉटन प्राइसेस तो लास्ट 1 महीने से लगातार घटे, 1 महीने से लगातार घटे हैं. तो उसके बावजूद भी तो टेक्सटाइल के स्टॉक्स कूटे जा रहे थे, क्योंकि इंडेक्स घटते जा रहा था और बी ग्रुप को पनिशमेंट दी जा रही थी. तो 1-to-1 कोरिलेशन मत कीजिएगा. मैं लॉन्गर टर्म की बात कर रहा हूं, और यहाँ पे एकदम शॉर्ट टर्म कोई डे टू डे खेल मत बैठा लीजिएगा. एक राउंड कॉटन प्राइसेस के करेक्शन का हुआ है, हो सकता है कॉटन का प्राइस वापस एक लास्ट आखिरी नया हाई भी दिखा दे. तो ट्विटर पे पता नहीं आजकल कुछ साल भर से बड़े विचित्र किस्म के जंतु हो गए, 20-25 फ्रॉड बाबा टाइप के चार्टिस्ट लोग हैं जो अपनी दुकान चलती नहीं तो दूसरों के लिए 50-50 फेक हैंडल बना के आके दिन भर गाली गलौज करते हैं. हो सकता है कॉटन का प्राइस नया हाई भी बन जाएगा. आप देखोगे हमारी टाइमलाइन पे बहुत गंदी गंदी गालियां लिखने वाले भी आएंगे. वो आइडिया है हमें कौन इस तरह के काम करते हैं, तो उस वक्त उन गाली गलौज से भी डिस्वेड मत होइएगा. और नया हाई अगर आ भी रहा है कॉटन पे तो उससे डिस्वेड मत होइएगा, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म साइक्लिकल टॉप बनने में हो सकता है एक और फाइनल टॉप बनाए. तो हमें इन्वेस्ट करना है टेक्सटाइल के स्टॉक्स में लगता है कि फाइनल चुका है. अगर एक और कॉटन में अगर नया हाई लास्ट हाई आता है और फिर भी टेक्सटाइल के कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो नए लो पे नहीं जाते हैं, मेक अ हायर लो, so that's when I'll get aggressive on increasing allocation on them. And after the cotton prices make a lower top, whether or not after going to a new high और उसके बाद फिर मुझे 2 टॉप का वेट करना पड़ेगा, और this time itself we don't go to a new high and we end up making a lower top. तो अनसर्टेनिटी है, इसको पीसेस में हमें खेलना होगा. But if somebody is not going to do a leverage trade and not take too much of an exposure and make some sensible, humble investments, so there are a number of textile stocks that have become a लॉन्ग टर्म स्क्रीमिंग बाई का मतलब है 10-15% के एरर की जगह रख के थोड़ा सा माल उठा लेना, जिससे कि आप कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सको. और अग्रेसिव हो गया कि 5% में टेक्सटाइल स्टॉक्स में घुस जाऊंगा, पोर्टफोलियो में 6%-7% टेक्सटाइल स्टॉक में होऊंगा, उसको उस अग्रेशन के जस्टिफाई होने में अभी टाइम है. आई होप आई हैव गिवन यू एज डिटेल्ड एन आंसर एज इज पॉसिबल. Yes, thank you. Lalit, next query if you have any. Yes, sir. आपके लिए ये about regarding the attrition issues for IT companies. No, I feel this whole collapse in tech startup world, I think this attrition issue will go away in next couple of quarters, and then you'll see some kind of a stability in terms of even the salary hike and all those stuff. So maybe 2 quarters down the line, you will not hear the same kind of a noise which you are hearing right now. So I'm fully I'm running a highest allocation on IT stocks, right? So as compared to the Nifty, I'm like some 600 basis points overweight on IT stocks,
I'm comfortable with that allocation. I have bought it in this panic, and I'm gonna buy more, right? As if I get a decent exit in some of the banking stocks which I'm currently holding, then I'll be putting some part of that money into the IT stocks because the valuations are very very cheap. The cash absolutely debt free, and the free cash flow and everything is fantastic. Dividend paying, buyback, and everything. So I think you should not face any problem in the IT stocks if you have a time frame of 18 to 24 months. KDSG, you want to add something on this? I have a small insight into this. Just about the prior weekend, I was in Bangalore, and my several of my batchmates from XLRI are at a CHRO level in the IT majors. So we had a get together, and business inevitably ends up coming in even during social hours. And several of them who are like the head honchos, the head of human resources at these mega policies that IT companies have become today, they were kind of taking digs at each other. तू मेरे आदमी चुरा रहा है, वो बोलता है तू मेरे आदमी चुरा रहा है. And the IT industry in Bangalore, the big major ones, are keeping on poaching from each other, and salary costs are therefore keeping increasing, which means despite इतनी बड़ी देश में जो बेरोजगार या सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर इंजीनियरिंग कॉलेजेस से जो सो कॉल्ड आईटी इंजीनियर्स बन रहे हैं, जो क्वालिटी मैन पावर है, वो दिक्कत है उन्हें. They are the worry of all of these IT companies, human resources heads or number twos, or head of compensation. Even a head of compensation at Infosys would be somebody who's like deciding the bonuses of 1 lakh employees or 70,000 employees worldwide. So these guys have a very deep insight into what's going on. आप भेज दीजिए ऊपर. इनको ये समस्या है कि हमें इस साल भी राइजिंग वेजेस पे विद इन बजट्स हायरिंग करनी, और बहुत टाइट है सीन. couple of partner level people at the large global headhunter firms are also my batchmates in Bangalore, who are specialists in IT industry recruiting. So the buy side and the sell side of IT manpower were all in large numbers at that get together, and the bottom line is log nahi mil rahe hain, dhanda hai. So when the issue is कि हमें लोग चाहिए, और so growth is going forward not really a concern. The overreaction to a spurt in interest rates rather than a smooth rise in interest rates, that overreaction is what has spilled into the markets. Order books या prospecting या expected जो budgets plot हो रहे हैं इनके, वो कोई किसी के भी budget plot में कहीं पे अभी तक dent नहीं है. सबके budgets upward looking है, both for expenses and incomes. So I think IT का जो कुटाई हुआ है, वो कुटाई इसलिए हुआ कि भैया सब खा पी के एकदम मोटे हो गए थे. 18,000 पे सबको 24,000 लगता है, 100 शेयर बेचना नहीं है, तो मार्केट हैड ए सिक्युलर रन. एंड आफ्टर दैट बाजार के अंदर सबकी चर्बी निकाल दी गई है, और अब जब चर्बी निकल गई है तो अब कोई की लेने की हिम्मत नहीं आएगी. एकदम नशा झाड़ दिया पूरी तेजी का 6 महीने ने. तो जो राधा किशन जी दवानी की एक लाइन है जो मेरे लाइफ में एक फेवरेट बन गई, कि शेयर बाजार में टाइम टू टाइम चवन्नी में माल बिकेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है. पर ये शेयर बाजार का नेचर है कि जिस दिन शेयर बाजार में चवन्नी में माल बिकेगा, उस दिन चवन्नी खर्चा करने का जीरा बहुत कम लोगों में होगा. आई थिंक वी आर इनसाइड दैट मोमेंट राइट नाउ. हेलो, Any query? नो सर, मेरे पास अभी कोई क्वेरी नहीं है. So I have I received couple of I them. can still see some 26 requests to speak, and we sincerely apologize to all of these participants that I there is a glitch in the Spaces software today, and none of the co-hosts or I am able to see any requests. So if you are unable to add anyone, please do not take it in a way that we are not choosing you or selecting you to be a speaker. The Twitter Spaces is still in a beta mode. It's not a finally launched software. Maybe we'll have a more efficient space another week. And कितने ही है? केडिया सर, अगर आप एक बार उनको बोलोगे कि वापस से रिक्वेस्ट भेजने के लिए, so I can add them.
Yeah, please try and send your request again. Delete the request Yeah, first. because Already जो जो online हो request गए. मैं देख पा रहा हूँ, I am trying to add them. Hmm. Ankit ji, you can ask your question. Ankit Yeah, Bansal. thank you, Keda sir, for the opportunity giving for speaking. So my question is, just as we see the GST number of the month of May, which is lower than as compared to the month-on-month basis from the April. So, how as an investor we can take it these kind of figures? I personally feel, to make a linear understanding out of these economic activity data, market always ends up making emotional reactions. Lot of time, hello. Yes, sir. Your voice is audible. lot of time lot of time there are a lot of internals into numbers like GST where cross adjustments are there, and large filings, and बहुत सारे export GST के भी credits होते हैं जो bunching up हो जाते हैं, unless and until there is a very dramatic large drop or a very dramatic large rise which has a rational explanation. There is some amount of noise in all data, some random movements. तो अभी अगर 6 महीने तक अगर जीएसटी के एक्सपोर्ट्स प्रोसेस नहीं हो रहे थे, एक्सपोर्ट की जीएसटी के रिफंड्स प्रोसेस नहीं हो रहे थे, लॉकडाउन के इम्पैक्ट में वो सारा डीले साइकिल चल रहा था, और प्रायर मंथ्स में अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड जीएसटी का नंबर आ गया बिकॉज एक साथ बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग हो गई है और उसके कारण बेस इफेक्ट से थोड़ा इस बार कम आ गया. सो आई थिंक best is do not get swayed too much. If you are an investor, तो आप मंथ ऑन मंथ डेटा को देख करके पूरे भविष्य को जज कर लोगे तो गलत हो जाएगा ये. तो मच बेटर वे to have a short term control over your market risk is by focusing on what the market is doing, and instead of getting obsessed with these numbers for taking a long term readjustment call on your portfolio, it is better you look at charts of the stock prices to have a better sense of risk. See, ignorance I is bliss. Ignorance is bliss, undoubtedly. But that is often done when, infants are ignorant, and then that's why they are in bliss. But the whole idea of growing up and becoming matured is that despite knowing so many things, the skill to ignore certain things so that you can stay innocent and devoted to your mission of being a good, great investor is what will make you a mature investor. I want to add two lines. Got it, sir. Thank you. Two lines into this, right? So first of all, you will always see the April GST collection will be always higher than the May, right? You go and check the past data, right? Because of the year end factor. So Yes. there is nothing to read into this, as KDAG said. Nothing to read into this. I take this 1,46,000 crore number as a very positive number, and your economy is going absolutely fine. Nothing to worry on the economic front. And whatever the problem you are facing in India in terms of inflation and everything, let me give you one data which you can further research on it. In 2011, India CPI inflation was somewhere around 11%, and right now we have an inflation around 7.5, 8, right? So and then we were counted as a fragile five economy, right? And right now, you go and Davos and everywhere, India is making such a buzz that everybody wants to invest, or some kind of they want to observe India at least, right? And that is a quite a positive thing. So nothing, no problem in the economy front as such. We have only one problem which we have to deal with right now, is a higher crude prices, which government is trying their level best to deal with it. And the second problem, we are down, and why we are talking, why this bearishness is all around, and only because of the mother market, which is because USA is in trouble. There is no doubt. USA is in some kind of a trouble. When I say trouble, it means some kind of a slowdown, right? And you are having that.
you are facing the heat because of that, and all the global markets are facing that kind of a heat. And let me just make one line bullish statement on this. India is the best performing market in the world among large economies in 3 years time frame and 1 year time frame. So Prakash, that let me add one line to this. But on the yeah, last 1 month time frame, India is lagging behind S&P. yeah, absolutely. So I'm Which is talking about, actually an opportunity. Which is actually an yeah, opportunity. absolutely. So in 3 years time frame, so let me go back 10 years time frame, three years time frame and 1 year time frame. I think Taiwan has done some kind of a 2-3% kind of a outperformance in one time frame. Barring that, India is at par to the USA, or in some instances, India has done better than as compared to the USA. So India economy is doing fine. Everything is fine. Only you have to work on your stocks. You have to do deep research, as KJ said, right? You have to go into detailed charts and everything, and you have to see the earnings, and you have to back the stocks where you are seeing some kind of a earning explosion. So if you are getting a PAT growth of 30, 40, 50% in an overall depressed environment, right, high inflation environment, if you are getting some companies reporting a profit growth of 30, 40, 50%, that, and if the RS rating and everything is fine, chart is looking fine, overall promoter plus FII plus DI holding is greater than 75-80%, you can back that stock for your long term investment. So that's it. No problem in the economy whatsoever at all, right? No problem. Okay, sir. Thank you. Got it. I have a request. We will have a hard stop of another 5 or 7 minutes. I don't want to continue any spaces beyond 9 o'clock. Time pe sona, time pe utna, the age-old wisdom of early to bed and early to rise keeps a man healthy, wealthy and wise. So we will start winding up, and let's set up, say, we take 3 more questions, and those that could not be taken up, please understand, anything done within limits is good, and today's space is a little compromised because of that button for accept request not working. So Navneet, please go ahead and select 3 more questions, and we will thereafter have a 1 or 2 minute concluding remarks from both me and Prakash ji. Prakash, is that okay? Yeah, absolutely cool. ये पूरी रात जगो, स्पेस पे ज्ञान No, बघारो और अगले दिन रनिंग no, मार्केट में कीबोर्ड के ऊपर बैठ के जंभाई लो, और और no, और आपको चाय पिलाने वाला, कॉफी पिलाने वाला टेंशन में रहेगा कि कब साहब कीबोर्ड के अंदर कॉफी घुसेड़ देंगे, और उसके बाद चीखेंगे कि अरे अरे कीबोर्ड में चाय चला गया, जल्दी से साफ करो. तो वो सब, वो बेकार जिंदगी है. 9-9:30 बजे तक निपटाइए, अपने अपने परिवार के साथ हंसिए, बोलिए, अपनी इवनिंग वॉक कंप्लीट कीजिए और टाइम पे 10 बजे सो जाइए. सो नवनीत, प्लीज सिलेक्ट the next 3 best questions that you see according to you. श्योर सर. प्रकाश सर, आपके लिए क्वेश्चन है. नितिन का क्वेश्चन है कि आपने जैसे कहा कि अभी नेक्स्ट 1 महीने में मार्केट साइडवेज मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी ऐसे मार्केट में प्ले करने के लिए? वो मेरी विश है, राइट, और विश के पीछे डेटा है, राइट. बिकॉज कहीं ना कहीं देखो, मार्केट को ये पता है कि जून के नंबर थोड़े से वीक आ सकते हैं, राइट. सो मार्केट, मैं ये चाहता हूँ कि जब जून के क्वार्टर के नंबर के पास जब मार्केट जाए, तो मार्केट थोड़े से माहौल थोड़ा सा डिप्रेसिव वाला है, डिप्रेस्ड हो, तो कुछ भी मार्केट को खराब हो गया तो वो अच्छा लगेगा. बिकॉज मार्केट को ये लगेगा कि यार सब कुछ बुरा ही है, कोई बड़ी पोजीशन रखेगा नहीं, और जब तक बड़ी पोजीशन नहीं होगी तब तक वो अनवाइंड नहीं होगी. और अगर मार्केट में थोड़े प्राइसेस नीचे हैं तो बेयर को हिम्मत नहीं होगी कि यार मैं यहाँ पे बेच के पैसे कमा सकता हूँ. तो मेरा हमेशा ये मानना है कि देखो, मार्केट का एक, अब कभी भी मेरे को 17 साल हो गए, मेरे 17 साल में मैंने देखा 12 साल मार्केट साइडवेज रही है, और 4 साल अगर आप मंथ ऑन मंथ देखोगे तो 4 साल बुल मार्केट रहा है, और 1.5 साल से 2.5 साल का बियर मार्केट रहा है. तो ये 17 साल की समरी है. तो 10 साल मार्केट साइडवेज रहे, यानी 70% मेरे करियर में मार्केट साइडवेज रहा. तो मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ साइडवेज मार्केट का. साइडवेज मार्केट में मैं सबसे ज्यादा पैसे कमाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग, क्योंकि उसमें स्टॉक्स चलते हैं. जैसे अभी केडिया जी ने बोला कि भैया कॉटन के प्राइसेस नीचे आने वाले, आप देखो, आप 2-3 टेक्सटाइल के स्टॉक सर्किट मार दो, ठीक है. रेमंड में आपकी मेरी सबकी पोजीशन 400 रुपए से है, तो ठीक है, वो चले ना. बॉम्बे टाइम जैसे आड़ा टेढ़ा स्टॉक भी चल गए, सो उसमें स्टॉक्स चलते हैं, और स्टॉक्स में भी पैसा बनाते हैं, ऑप्शंस में बहुत बड़ा पैसा बनता है. बिकॉज मेरी मेजोरिटी ऑफ द अर्निंग जो है वो कहीं ना कहीं मेरी ट्रेडिंग से आती है. सो वो ट्रेडिंग मेरी बहुत अच्छी चलती है साइडवेज मार्केट को.
बुल मार्केट में क्या होता है कि मैं थोड़ा सा डरता हूँ कि अगर मैं एक बियॉन्ड पॉइंट एक स्टॉक को चेस कर दूं तो वहां मैं पैसा लूज कर सकता हूँ। दैट्स इट। बाकी किसी और दिन इस टॉपिक पे बात करेंगे। और कोई क्वेरी है प्रिया जी, इसमें कुछ आप कहना चाहते While we proceed to the next questions, just a quick observation. I was talking about कि डॉलर इंडेक्स में आज नहीं तो कल तक रिवर्सल आ जाएगा. डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी कुट गया अच्छी तरह से, हैं? और डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी is down 0.56% over yesterday and the chart is smashed out. सरप्राइजिंगली S&P 500 ने ज़्यादा कुछ बहुत अभी तक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन या ब्रेकआउट नहीं दिया. आई थिंक कुछ इंट्राडे डेटा होगा, बट वंस इट इज़ अबव 4140 टुडे, अभी राइट नाउ 4118 है. एक बार 4140 के ऊपर गया तो फिर वहाँ गाना बजेगा किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की. और अपनी निफ्टी क्यों सिंगापुर में 100 पॉइंट और उछल गई शाम को. यहाँ हम 16550 के ऊपर के आसपास बंद हुए थे और अभी ये तो सीधा 100 पॉइंट और ऊपर है. हाँ, सो ये आपका डॉलर इंडेक्स का इम्पैक्ट है. अभी सडनली थोड़ा सा बाजार के अंदर में ये जो दो लॉट ट्रेडिंग वाला बाबा लोग जो ट्रेडिंग करा रहा है ना, कि आज हमने बेयर पुट स्प्रेड कर दिया, ये कर दिया, जरा सा 25 पॉइंट का हिलचू लाने के साथ साथ लोग मत्थे मारते जाते हैं अभी भी बाजार में. मेरे को ये लगता है कि प्रकाश जी, जब तक ये सब बड़े कंपनियों के रिजल्ट जुलाई में आएंगे, वो रिजल्ट को पढ़ के सारे पंडित लोग ऊपर फंसेंगे, मार्केट पहले ही चढ़ लेगा. पॉसिबल है. क्योंकि मार्केट का जो माइंड है, जिसको जो लोग डोमिनेट करते हैं मार्केट के माइंड को, वो लोगों को पहले से सब पता होता है. तो जब तक ये रिजल्ट्स का कंफर्मेशन आएगा, इन्वेस्टर्स के लिए तो सेल जोन ऑलरेडी पहुंच जाएगा. द स्टॉक्स वुड हैव क्लाइम्ड सो मच. आई थिंक पूरा जून भर वॉलेटिलिटी के साथ मार्केट इतना चलेगा कि रिजल्ट्स के करीब जब तक हम आएंगे तो ये सब आईटी के स्टॉक्स यहाँ से 20% तो पहले ही बढ़ चुके होंगे. पॉसिबिलिटी है. एंड एज आई टोल्ड इन द बिगिनिंग कि वो 17400 की एक पॉसिबिलिटी है, जो 25-30% पॉसिबिलिटी है. क्वाइट पॉसिबल. 16900, 17400 और उसके बाद 18600. Great. So we have to. I am actually looking at chart structure. I am not making this as a forecast yet. आके जिसको बाद में ट्विटर पे गाली देना, हम उसका हैंडल ब्लॉक कर देंगे. बट मेंटली कीपिंग वन सेल्स ओपन रादर देन बिकमिंग रिजिड एंड सेइंग कि नहीं बहुत वर्ल्ड की हालत खराब है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. ये प्रॉब्लम्स जीवन भर रहेंगी क्या? सब सॉल्व भी तो होती है. पुराने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, फिर आगे उसके बाद लोग इब्यूलियंट हो जाते हैं, तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, फिर नया प्रॉब्लम चालू हो जाएगा. कोरोना का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो वर्ल्ड में जियो पॉलिटिक्स आ गया, मैक्रो का प्रॉब्लम आ गया, साइकिल है, पलटता रहेगा. बुदबुद साबुन के बुदबुदे की तरह समस्याएं आती रहेंगी और बुझती रहेंगी, नई समस्याएं आती रहेंगी. हमको इसके बीच में मार्केट का साइकोलॉजी देखना है. मेजॉरिटी ओपिनियन बुलिश हो गया है तो बेरिश हो जाना है, बेरिश हो गया है तो बुलिश हो जाना है. और उसका प्रॉपर मेजरमेंट कितने ही सर्वे पोल कर लो आएगा नहीं, वो चार्ट पे ही आता है. तो मैं ये कहूँगा कि मैं 20,000 की फोरकास्टिंग बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, पर अगर ये 19,000 19,500 तक भी इंडेक्स चली जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा. तो उस प्रकार की संभावनाओं के साथ खुले दिमाग से कुछ हिम्मत करके हाई बीटा स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट्स जो आपको ठीक लगे उनमें कीजिए. इनिशियली पोजीशंस को छोटा रखिए, क्योंकि अगर मूवमेंट का स्कोप बड़ा है तो भी आप बड़ा पैसा कमा लेंगे कुछ छोटी पोजीशंस को लेके. और छोटी पोजीशंस कुछ हाई बीटा स्टॉक्स में बनाइए, जो क्वालिटी नेम्स को आप समझते हैं, जिन कंपनीज को आप समझते हैं, उनमें पोजीशन बनाइए, चाहे डिलीवरी की चाहे वायदे की. और जैसे जैसे वो आपके फेवर में आए और बाजार का माहौल कलर पकड़ता जाए, तब सौदा बढ़ाइएगा. ये मेरी समरी आज की स्पेस की मैंने कर दी. और भी अगर कोई एक दो क्वेश्चन है तो आप ले लो प्रकाश जी, एंड देन आई विल एक्सपेक्ट यू टू डू योर समरी एंड देन वी जस्ट से गुड बाय टू एवरीवन वे अहेड ऑफ 9 o'clock. 1.5 घंटा करीब हो गया स्पेस. I want your view on defense sector. Just 2 lines, because I don't have any view on this. I have some position in one FNO stock, but I don't have a clear view on this sector. I can't hear you clearly. I'm not sure if it is the The problem. defense sector, defense sector, BEL, HAL, BDL type stocks. बिल्कुल. तो क्या है ये, मैं भी इन सब पर बहुत बुलिश हूँ. अभी खाली मैं अगर ये कहूँ कि विच सेक्टर्स टू बी बुलिश ऑन, फार्मा के स्टॉक्स की चार्ट अभी भी इधर उधर मंडरा रही है. उनमें रंगत नहीं बनी कि क्रॉस द बोर्ड बाइंग आ जाए. फार्मा के स्टॉक्स को छोड़ के मोर और लेस सभी सेक्टर्स में, इवन दुखियारे NBFCs जैसे स्टॉक्स में भी बहुत बड़ी रिटर्न्स मेरे को दिखती है पॉसिबल. काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं. आप चोलामंडलम को छोड़ दीजिए तो आपका चाहे इवन पब्लिक सेक्टर रिलेटेड जो फाइनेंस, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, PTC टाइप के भी स्टॉक्स हैं, तो सिर्फ एक फार्मा ही है जो इस वक्त लग रहा है अभी भी भांग पी के इधर उधर लंगड़ा, वो मतलब लड़खड़ा रहा है.
इट्स जस्ट टेकिंग इट्स टाइम टू सेटल. दे आर ओवरसोल्ड. यहाँ से फार्मा बेच के भी कोई जीतेगा नहीं, बट फार्मा में हो सकता है कि फार्मा में भी ए लेट मूवर. बाकी फार्मा को छोड़कर मैं अगर कहीं पे भी खोजूं तो हर एक सेक्टर के अंदर में मेरे को, अब वो चाहे जी है जो फटना शुरू हो गया, सन टीवी मेरे को लगता है यहाँ से 600 का भाव और 620-30 के ऊपर निकल गया तो 800 का भाव भी पॉसिबल है. तो आपके जो टीवी 18 ब्रॉडकास्टिंग में जितना लोगों ने ऊपर और नीचे में बवाल कर लिया, हम बहुत पहले घुसे थे, बहुत पहले निकल गए, फाइनल पीक तक नहीं रहे, 10% नीचे ही निकल गए. अब मेरे को वापस बाई सिग्नल उसमें दिख रहा है जो पुराने हाई के ऊपर जा सकता है. जाएगा मैंने नहीं कहा, देखेंगे. यहाँ से दांव लगाना बनता है, फिर फेवर में आते जाएगा तो देखेंगे. इवन डेल्टा कॉर्प जैसे स्टॉक में राकेश जी ने माल बेच दिया है, पोर्टफोलियो में होल्डिंग कम कर दी है और उस पर गाँव बेच बाच करके उसको भुरता बना दिया उसका. तो उन्होंने तो बेचा है मार्च के क्वार्टर में, उसका रिपोर्टिंग आ रहा है अभी मई में, और लोग उस खबर को पढ़ के अपना बचा खुचा माल इतने घटे हुए भाव में बेच रहे हैं. कैसे मालूम कि आपको जून क्वार्टर के एंड की रिपोर्टिंग में मालूम पड़ेगा कि उन्होंने वापस अपना एक्सपोजर बढ़ा लिया. और अगर कोई लॉन्ग टर्म व्यू ले तो मेरे को कोई आश्चर्य नहीं लगता कि 190 की मंदी नहीं और डेल्टा कॉर्प अगले 1.5-2 साल में 500-600 का भाव भी हो जाए. नहीं, और वो मल्टी ईयर मूवमेंट्स वाले भी बहुत सारे चार्ट्स हैं. विद इन द ईयर अगले 3 महीने में 30-40% बनाने वाले चार्ट्स हैं. और यहाँ से 20-30%, 40% गिर जाएं, ऐसे चार्ट्स मुझे बहुत कम दिख रहे हैं. पूरे निफ्टी इंडेक्स पे आईटीसी पे स्टॉप लॉस के साथ, वो भी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट ट्रेडिंग करने के अलावा मेरे को कोई स्टॉक नज़र नहीं आता है जिसकी चार्ट के ऊपर मैं कॉन्फिडेंस के साथ राइट अवे शॉर्ट करूं. देखते हैं, अगर मारुति 8,200 के ऊपर नहीं जाएगा तो शायद उसको शॉर्ट करेंगे. 50 स्टॉक्स में से अगर मेरे को 2-4 स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं जहाँ डरते डरते सोच समझ के थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा शॉर्ट, बाकी की लॉन्ग्स के सामने कुछ तो शॉर्ट रखो. सवेरे सवेरे गैप डाउन अगर हो गया तो टेंशन नहीं होगी. तो उसमें 50 में से 4-5 स्टॉक भी नहीं मिल रहे हैं. सबके पैटर्न्स यही हैं कि भैया बुद्धि को सस्पेंड करो, पैटर्न्स के साथ तेजी करो. बुद्धि जो है ना, वो बुद्धि हमेशा कंफर्ट खोजती है, और जब यहाँ से और 500-700 पॉइंट बढ़ लेगा, 17,400 आ जाएगा, सबको सब कुछ कंफर्टेबल लगने लगेगा. Great, Sushil. Okay, so shall we wrap up? Yeah, sir. सर एक क्वेश्चन है हार्दिक हार्दिक Let this be the last question. Let this be the last question. Hardik, okay, please go ahead. Sir, your top bets for 17,400 और ये चाइना प्लस वन सर आपको कैसा लग रहा है, मतलब केमिकल सेक्टर? These shares, I'll take this one. So shares are already distributed to the public, right? You go and check the shareholding pattern of Balaji Amines, Alkyl Amines, and all those companies. Even for that matter, Laurus Lab. In most of the cases, the promoter plus DIs plus FII holding is less than 65%. So 30-35% kind of a float is lying with the retail public. It means that these stocks are well distributed among retail public because of all the hype and noise, and the valuations are still not cheap, right? And the third thing I want to add here is still give and take everything. These are all commodity business, right? You cannot give 40, 50, 60 kind of a PE for a commodity, kind of a trade. So I'm not interested. I'm not buying anything in chemical space, to be honest. Kedia, you want to add something on this? And most of the stocks are in stage 3, right? So stage 3 stocks I generally don't buy. Kedia, you want to add something? I could not really fully clearly hear. So he's asking the view on chemical space, basically China plus one. Yeah, China. No, I'm asking. Sir, no, voice is not clear. Prakash, can you just repeat what he's saying? He's asking that China plus one theme, and basically I gave a view on chemical space. You want to add something on the manufacturing side or electrode and all those stuff, you can add. I don't want to go into so much of micro detail. I have a number of select chemical stocks also where I'm going to play purely by charts, because eventually बहुत ज़्यादा analysis करके जब brain paralysis में आ जाए, we resort finally to the charts and stick to them. So I'm not at all bearish anywhere on any of the chemical stocks. Selectively number of chemical stocks have started giving a buy. बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने से कोई एक्स्ट्रा एज क्रिएट हो जाएगी. हमें एक्चुअल अंडरलाइंग ट्रेड एंड कॉमर्स के ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करना है या स्टॉक्स को प्रेडिक्ट करना है? नहीं, स्टॉक्स को प्रेडिक्ट नहीं करना है सर. मैं ये जो चाइना प्लस वन थीम चला है और उसके वजह से ये सब केमिकल सेक्टर में जो हाई हो गया है प्राइसेस का, नीचे से स्टॉक 400-250 रुपए का दीपक नाइट्राइट 3,000 होके अभी 2,000 पे ट्रेड कर रहा है.
उसमें रिटेल ही फंसा है सर। तो अभी एज पर नहीं, मेरे ग्राउंड को लेवल ठीक है, पे रिटेल का काम है फंसना, नहीं बट नहीं मेरे को नहीं लगता सर, है कि कोई लॉन्ग टर्म ट्रेंड इनका भी खत्म हो गया है। सर मे लेट बी यू मी नो। कंप्लीट। मैं ऐसा पूछना चाह रहा हूँ आपको कि सर ये जो चाइना प्लस वन थीम है वो तो लॉन्ग टर्म के लिए है। मतलब गवर्नमेंट इज पुशिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, चाइना से राइट। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में लाना है, लॉन्ग टर्म में चलेगा ये। तो इसमें इतना फ्रेंजी अभी क्यों आ रहा है? मतलब व्हाई व्हाई पीपल आर गेटिंग सो मच नहीं गंगो अबाउट? नहीं यहाँ नहीं पे कुछ चालू नहीं हुआ है अभी तो नहीं सर। नहीं मतलब सर नहीं प्रशांत सर एक मिनट, नहीं मेरे नहीं, हिसाब हार्दिक से हार्दिक हार्दिक सुन के लो, समझो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो कुछ फैंसी नहीं है, आप समझो मेरी बात को। दीपक नाइट्राइट किसी ने 300 रुपए पे नहीं लिया, सबको 700-800 रुपए से स्टोरी मालूम हुई और 3000 तक एवरेज किया। उस बंदे का एवरेज 2000 रुपए का होगा, चाहे वो 700 रुपए से एसआईपी कर रहा होगा और वो अभी 1800 या 1900 का भाव है। तो वो बंदे ने प्रैक्टिकली 2-2.5 साल में कोई पैसा लंबा नहीं बनाया। एक आध स्टॉक में बन गया, लेकिन कुछ लोगों ने बनाया, कुछ लोग फंसे भी है। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको शांति से सुनो, और वही होगा जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेरा थोड़ा सा डिटेल स्टडी है। ये सारे स्टॉक स्टेज 3 में है और स्टेज 3 में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये स्टॉक नहीं चलेंगे। केडिया जी के 2-3 स्टॉक जरूर चल जाएंगे, क्योंकि वो काफी बड़े स्टॉक पिकर है, उनका चलता है। बट मेजोरिटी ऑफ द सेक्टर, जैसे एक एसआरएफ चल जाएगा, तो मेजोरिटी ऑफ द सेक्टर कहीं नहीं जाने वाला। अगले 2 साल में भी यही भाव रहेगा, बिकॉज पब्लिक को पूरा माल दे दिया है। 40% होल्डिंग केमिकल स्पेस का फ्लोट देखोगे ना, अगर 100 शेयर है केमिकल स्पेस में, तो 60% प्रमोटर प्लस डीआईएस प्लस एफआईएस है, 40% पब्लिक के पास आ गया। उसमें वो फार्मा के कुछ एपीआई वाले स्टॉक्स के नाम भी डाल दो, ठीक है। तो जब 40% फ्लोट पब्लिक के पास आ जाता है, तो वो नहीं चलता है। वो फ्लोट को 30% या 20% होना पड़ेगा, वापस वो माल जो रियल ओनर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, उनके पास जाएगा, उसके बाद चलेगा। सो आई एग्री विथ योर व्यू कि ये लॉन्ग टर्म में ही चलेगा, अभी कुछ नहीं चलने वाला। 2-3 जो केडिया जी का व्यू है, 2-3 स्टॉक्स पे वो चलेंगे और उससे मेरा कोई वो नहीं है, जैसे कि एसआरएफ एंड ऑल, दे कैन डू वेल, राइट। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सर So लेकिन मेरे thank को you तो ये everyone for coming in. It's 9 o'clock. We have a hard हाँ, stop so today. we have to wrap up. Hardik, last line from you, and then केडिया जी will conclude and we'll No, wrap the this up. conclusions are all done. We will no, not overstretch the time. We have burst okay our sir, time okay, limit. Let's have the last remarks I from will Hardik, join in and next. then we'll say Tata. Hardik, Okay, your sir. last reactions to what Prakash said? Sir, my reaction is I still find chemical theme to be a long term story. ये शॉर्ट टर्म में सब फंस गए हैं। अभी तो जमीन में खड्डा खोदा है सर, बिल्डिंग बनना बाकी है। तो हार्दिक चलिए, हार्दिक so I will हार्दिक request वही both तो of बोला you. ना। I will request both of you to carry on this conversation beyond this नो space. नो We have run out of No, time, no, 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 and no, sir, no. and you know, Next otherwise time. otherwise this animated conversation will go on for another 15 minutes. No, sir, So no, as sir. the Thank you. moderator, to keep discipline on time so that we Yes, can sir. afford to keep meeting regularly. एक ही space में Okay, पूरा sir. exhausted होके अपना सारा testosterone और androgen burn नहीं करना है, वो use करना है बाकी की life में. So thank you everyone for coming in. And we wish next space the software works better and we can have a greater engagement. Broad idea is Prakash cautiously optimistic. I am optimistic with a sense of abandonment. मुझे भयंकर तेजी लग रही है. प्रकाश जी cautiously तेजी में, मंदी में हम में से कोई नहीं है. And things are broad idea is ले लेके माल बेचिए और the index may be confusing a lot more going forward over the next three months. नॉट ओनली इन इंडिया बट एवरीवेयर एल्स. ये नेचर ऑफ मार्केट्स है, वो हम इलियट वेव से डिसाइफर करते हैं कि इंडेक्स में बहुत गड़बड़ होने के बावजूद भी देयर मे बी लॉट्स ऑफ सेक्टर्स एंड स्टॉक्स वेयर वेरी स्मूथ रन मे बी अवेलेबल. सो फोकस ऑन व्हाट यू अंडरस्टैंड एंड व्हाट यू लाइक. यूज योर स्टॉप लॉसेस, साइज योर पोजीशंस राइट, सो दैट नर्वसनेस में आप स्टॉप लॉस नहीं ले पाओगे क्योंकि पोजीशन बहुत बड़ी हो गई है. और फिर हम दोबारा मिलेंगे. थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग इन. At the count of 3, I'll click on the shutdown button and then in some time the recording will get published. Prakash, any few quick 3-4 lines you have, you can say. No, you summarized well, right? So I'm bullish and I'm optimistic, but I'm ready to buy any panic on the street if at all your Yes, that's the 16,100 or right way 2. to play. That's what the index is suggesting कि बीच बीच में 300 500 पॉइंट के झटके आएंगे. आज Yeah. सवेरे 16,350 दिख गया और अभी SGX निफ्टी 16,700 के करीब है. तो जब भी नीचे का झटका है उस दिन शॉपिंग करो और वो इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी करो. Thank you everyone for coming in and have a very good night, goodbye, and we will see you again soon. Good night. 3, 2, goodbye.